स्टूडेंट्स, ये है पेपर 1 अप्रैल 2017 महाराष्ट्र सेट का है ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मीडिया द entities represented by abbreviations PCI, CBFC, NBA, ASCI are collectively called as। तो इसका सही आंसर है मीडिया रेगुलेटरी बॉडीज। इसके बाद है व्हाट इज प्रसार भारती। तो राइट आंसर है एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर पब्लिक रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सही आंसर है बी, नॉन वर्बल मैसेजेस आर कल्चर एंड कंटेक्स्ट इंडिपेंडेंट। Question number 4, the categorization of human communication into interpersonal, group and mass communication is mainly based on the criteria of, answer C, number of participants involved in communication। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो राइट आंसर है टीचिंग इन क्लासरूम, ग्रुप कम्युनिकेशन। Question number 6 है the perspective that communication is essentially a meaning-making process logically implies that, answer है D, decoding is more important। इसके बाद है question number 7, a person on a cycle travels from a place X to a place Y by speed 30 km/h and coming back by speed 20 km/h. What is the average speed of the person in the tour? The right answer है 24 km. Question number 8. In a city there are 50 squares including dead ends. Among these squares, M squares are there, each of which adjacent to odd number of roads. Then which of the following is impossible for the value of M? Right answer है 15, option D. Question number 9, in a arbitrary group of 6 people, which of the following situation is impossible? तो right answer है C, no 3 of them know each other and no 3 of them unknown to each other। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, let M be a 3-digit natural number such that the sum of the digit is 18 and the product of the digit is 0, then which of the following is not true? Right answer है इसका D, M is divisible by 9 and divisible by 13। इसके बाद यहाँ पर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही राइट आंसर है बी। इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है अ सर्टन मेट्रोपोलियन एरिया हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 9 million, of whom 5 million live in the city and 4 million live in the suburbs. Each year only 20% of the suburbanites move to the city, while 40% of the city dwellers move to the suburbs. Ignoring the effect of birth, death and migration, what will be the population of the city after completing 2 years? Right answer है 3.32 million. Question number 13, which of the following will complete the numerical series? राइट आंसर है 63, 7, 15, 31, 63, 127। यहाँ पर 8 का जो पहाड़ा है हम वो यहाँ पर ले सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर 63 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द सीरीज BDFH? तो राइट आंसर है B, OQS। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। In a code language, the word train is coded as SSZJM. Then what is the code for the word study? Right answer है A, RUTEX।
Which of the following shows the correct relationship among players, student and girls? तो राइट आंसर है ए. बाकी सब में इतना नहीं है. के बाद 17. Ashok jump higher than Mohan but not higher than Chetan. Naresh jump higher than Krishna but not as high as that of Mohan. Then what is the correct descending order of players considering their jump? Right answer is C. Chetan, Ashok, Mohan, Naresh, Krishna. Question number 18. Based on the following statement, which of the conclusions given below will follows? तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए है ऑल सोशल वर्कर्स आर पॉलिटिशियंस. स्टेटमेंट बी है सम पॉलिटिशियंस आर प्रोफेशनल्स. एंड कंक्लूजन 1 है नो सोशल वर्कर इज़ अ पॉलिटिशियन. और कंक्लूजन सेकेंड है ऑल पॉलिटिशियंस आर प्रोफेशनल्स. तो इसका आंसर है डी. नाइदर 1 एंड सेकेंड फॉलोज. दोनों भी फॉलोज इसको नहीं करते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है. 19 का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी C1. In the following diagram, the exports in crores of rupees of 4 companies C1, C2, C3 and C4 are given for 3 consecutive years. The right answer is C1. Question number 20. Using the diagram of above question, which of the two companies' average exports can be considered to be close during the 3 years? Right answer is C1 and C3. इसके बाद है a scientist collected 11 observations in connection with a particular experiment and calculated the summary measures such as mean, median, variance, maximum and minimum. Later the scientist found that two observations 54 and 43 were wrongly recorded as 45 and 34. Which of the following statements are true in this contest? तो राइट आंसर है यहाँ पर 1 ओनली. Corrected mean will be larger than the initial mean. Percentage of students of a college who are involved in different sports activities are given in a pie diagram. यहाँ पर दिया गया है ये पाई डायग्राम. इसके बाद है यहाँ पर तो इसका सपोज तो क्वेश्चन यहाँ पे सपोज देर आर 5240 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो राइट आंसर है 1 एंड सेकेंड. 1 है अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल एंगल ऑफ द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू बैडमिंटन इन 58 डिग्री. सेकेंड है अप्रोक्सीमेटली द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले सम गेम और अदर इज 4297. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23. इन द फॉलोइंग डायग्राम 7 cities आर कनेक्टेड via 2-way roads, no arrows and 1-way roads with arrows as a network. The number of distance path from city V to city R without going through any city more than once. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 6. Consider the network diagram given in the previous question. Suppose that the road connecting T and R got damaged and therefore traffic cannot go along that road. Then the number of distinct ways in which city R can be reached from the city Q without going through any city more than once is. The right answer 2. Question number 25. What is the full form of HTTP in the context of internet? तो hypertext transfer protocol. Option C is correct answer. Identify the incorrect pair from the following. तो इसका right answer है B. TTF word text file is wrong.
JPG graphic file is right. The dot wave audio file right. EXE executable file is right. TTF word text file is wrong. इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूनिट्स ऑफ डिजिटल मेमोरी. तो यहाँ पर इसका असेंडिंग ऑर्डर हमको बताना है. तो यहाँ पर इसका सही राइट आंसर है मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड बीटाबाइट. Question number 28. In the context of internet, the facility in which the server application allows many users to create and edit pages on a website through their browser is called wiki. Question number 28 है in the context of internet, the facility in which of the server application allows many users to create and edit pages on a website through their browser is called a wiki. विकीपीडिया पर हम लोग एडिट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग. राइट आंसर है ए IMDb, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब. क्वेश्चन नंबर 30 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग. विकीपीडिया, जिमी वेल्स. राइट. उसके बाद यहाँ पर भोपाल डिजास्टर इज caused ड्यू टू methyl isocyanate. 32. The major cause of waterborne disease is due to contamination by sewage. इसके बाद में यहाँ पर mangrove is a special type of ecosystem and is found along estuary. Option A is correct. Kyoto Protocol is an agreement to reduce global warming. इसके बाद है water resources is a key for the dispute between states. Kaveri dispute is between Karnataka and Tamil Nadu. Right answer is C. Question number 36 है which of the following is a national park in Maharashtra? Navegaon National Park. इसके बाद है यहाँ पर which of the following 5 pillars are expected in education policy 2016. तो इसका सही राइट आंसर है ए अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल एजुकेशन, इक्विटेबिलिटी, स्टेटस एंड अकाउंटेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 38 है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन डिफाइंड बाय स्वामी विवेकानंद. क्वेश्चन नंबर 39 है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर ऑफ आर्टिकल्स एंड इट्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एक्ट 1994. तो राइट आंसर है यहाँ पर इसका सी एंड डी, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. सम पिटोर द सर्वेस एंड केसी चेयरमैन. क्वेश्चन नंबर 41 वेटरनरी एजुकेशन इज रिलेटेड टू. इसका राइट आंसर है बी एंड सी, मेडिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन. इसके बाद है यहाँ पर What is the full form of AICTE? The right answer is All Indian Council of Technical Education. Question number 43. The main objective of teaching is option A right है to facilitate learning. इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44. Academic learning time does not depend upon. Right answer है students' attitude towards learning. 45 है dash is an essential quality of the best teacher. The question option B is right, genuine interest in teaching. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46. In dash method of teaching, teacher uses the maximum known as specific to general. तो इसका है राइट आंसर इंडक्टिव. इंडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं. इसके बाद है द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड लार्जली ऑन द. तो राइट आंसर है डी, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 48. Mr. Sindhu conducts question answer session in Mrs. Sindhu conducts question answer session in her class to determine the abilities of a student at the beginning of an academic year. This is termed as assessment, formative assessment ये कहलाता है. और
सबमेटिव कब होता है? सबमेटिव एकदम ईयर के लास्ट में होता है, और अगर स्टार्टिंग में और बीच में हम लेते हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, dash is thinking enables us to write statement and develop arguments in a step by step coherent manner is a logical. Question number 51 of the following is an reference management software is EndNote. Question number 51, the dash of a research article is placed near its beginning is abstract. इसके बाद है a proposal that may professionally serve as the starting point for further research is known as dash hypothesis. Right answer is a working hypothesis. इसके बाद में है research journals with a high dash are commonly considered to be more important than those with lower ones. Right answer है impact factor. इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, a dash is a short term intensive course for a small group, emphasizes problem solving or learning newer techniques. Right answer is workshop. इसके बाद यहाँ पर 55 to 60 को इतना बड़ा पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज में से देखकर यहाँ पर हमको इसके आंसर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, पैसेज का द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन यूरोपियन हिस्ट्रीज। तो आंसर है ए इज बिलीव्ड टू बी अ डिक्लाइन इन कल्चर एंड सोसाइटी इन यूरोप। इसके बाद में 56, द पीरियड फ्रॉम 400 टू 1400 AD इज नोन एज द मिडिवल पीरियड। इसके बाद है यहाँ पर द पीरियड ऑफ मिडल एजेस विटनेस द emergence of many smaller kingdoms in यूरोप। इसके बाद में है इन द मिडल एजेस द प्रोविजंस कंट्रोल्ड बाय द प्रिंस ड्यूक और काउंट वेर नोन एज फिफ्स। के बाद में है 59, इन फ्यूडल सिस्टम। इसका राइट आंसर है बोथ 1 एंड 2 आर राइट। किंग्स वर प्रोटेक्टेड बाय द वेसल्स एंड द वेसल्स वर प्रोटेक्टेड बाय द पीपल। तो बोथ आर राइट। इसके बाद में है 60, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेन अथॉरिटी दैट कीप द यूरोपियन सोसाइटी टुगेदर वॉज इज द चर्च। तो ये था हमारा 2017 महाराष्ट्र सेट का पेपर 1। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।